On the streets of Anantnag town, this is not an uncommon sight. Men walking through the bazaar and AK-47 casually draped across their shoulder. Each one of these men was once a dreaded militant. Today they make up the valley's largest group of surrendered militants, the JK Ikhwan, armed men who switched sides and now work for the state. Spending time at their official headquarters is a surreal experience. As we speak to the man who describes himself as the chief commander of this group, his comrades are spread across the lawn. Some stare down stony-faced from the roof. In each case, their rifles, pistols and automatic guns, casual extensions of themselves. In the early 90s, the Ikhwanis played a crucial role in breaking the back of militancy, providing inside tracks into groups they were once part of. A decade later, they are perhaps the most damned people in the valley. हमारे खिलाफ आप पाकिस्तान टीवी देखें, तकरीबन रोज वो हमारे खिलाफ उनका प्रोपेगेंडा होता है. एक प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ चल रहा है. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर है, वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है. उनका काम ये है कि इन लोगों को तोड़ दो, क्योंकि हम लोग निकले हैं इनमें से. हम लोग वो थे जो मिलिटेंट थे पहले, और हम लोगों ने इनके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया और हम लोगों ने इनकी कमर तोड़ दी. जो मिलिटेंट थे इनके बेस, इनके टॉप कमांडर्स हमने मार दिए. टॉप कमांडर्स हमने आर्मी ऑपरेशन में या पुलिस के ऑपरेशन में मारवा दिए. इन लोगों के खिलाफ सिर्फ हम लोग सक्सेसफुल रहे, इफेक्टिव काम किया हम लोगों ने इनके खिलाफ. तो ये लोग इसीलिए चाह रहे हैं कि ये लोग किसी तरह से इन लोगों को बदनाम किया जाए. Today, many Ikhwanis are on the temporary payroll of the Special Task Force or the Special Operations Group, separate wings of the state police, on a standard salary of 1,500 rupees a month. But they have repeatedly been accused of abusing their power, of using their mission against militants as an excuse to blackmail helpless Kashmiris. Once they become the task force or the cats for the security forces, उसके बाद उनके पास unlimited power आ जाता है. और ऐसा होता है कि उसका इतना ज़्यादा मिसयूज़ हो जाता है कि जिस घर में उन्होंने, जब वो मिलिटेंट होते हैं, जिस घर में उन्होंने खाना खाया होता है ज़बरदस्ती या मर्जी से, जिस घर ने उनकी थोड़ी मदद की होती, सबसे पहले उसी घर को वो टारगेट करते हैं. दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग देम. और ब्लैकमेल एक हिसाब से नहीं होता, एंड दिस कैन नॉट बी डन. एक सरेंडर्ड मिलिटेंट अकेला ये नहीं कर सकता है जब तक उसको टास्क फोर्स की बैकिंग ना हो, जब तक उसको सिक्योरिटी फोर्सेस की बैकिंग ना हो. जब उनकी बैकिंग होती है तो वो इसका इतना मिसयूज़ करता है, पैसे लेता है वो, जैसे कि भाई किसी के घर में जाके खाना खाया उसने 4 साल 5 साल पहले, या हाइड आउट में वहाँ छुपा हो, तो अगर उस घर में अब कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई हाइड आउट नहीं है, कोई मिलिटेंट का आना जाना नहीं है, फिर उसके बावजूद उस घर में जाता है, कहता है भाई तुमने फलानी टाइम ऐसा किया, तुम्हारा मैं बोल दूंगा, और तो मुझे इतना पैसा दे दो. So intense has been the criticism from the ordinary Kashmiri that this year the Chief Election Commissioner ordered them to be locked in on polling day. They could come out only to vote, but had to leave their weapons at home. You've got people who've surrendered their arms and have come over on this side. And the public perception has always been that they've been misused for other purposes by the government of the day. So we've issued instructions that the Special Operations Group and the Special Task Forces will operate only with the paramilitary forces and the army. But after a blood-soaked third phase, the state's police chief publicly disagreed, saying that the confinement had been a mistake. Confinement for the STF led to increased violence in the third phase, DGP A.K. Suri said. For operational reasons, it is advisable never to restrain the local police. And here was the crux of the debate. The security forces claimed that in the last election, surrendered militants actually helped create a secure environment for voters, so less people stayed away because of fear of the gun. But this time, polling day across most of South Kashmir at least looked like this, deserted and on edge. And Anantnag town saw its lowest ever voter turnout, just about 7%. Ironically, one of the candidates here was himself a former militant. In fact, just one of 15 contesting in the elections this year.